Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of बात से बात with Ardon. उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे. Today, the guest that we're going to have, he'd soon be joining us. एक उनका मुख्तसर सा तारुफ अगर मैं करवाऊं, तो you all know him as Miracle, and he produces music out of studio called Stardek. And he has been working behind the scenes thus far, but his work has already been heard and approved by fans. उनके recent जो projects हैं उनमें शामिल हैं दानियाल जफर के songs और उमेर जसवाल के songs. So without any further ado, ladies and gentlemen, let's have Medical on screen with us. Hello. And there we go. Hello. Hello. How Yeah, are that was a you? very humbling intro. I'm doing good. How are you? I'm good. I'm good. जनाब क्या चल रहा है आजकल? Everything is closed और quarantine. I mean, so-called quarantine चल रहा है आजकल तो. लेकिन how are you coping up with it? I mean, it definitely is a so-called quarantine and lockdown. तो खैर अब है ही नहीं. Uh, it was very difficult क्योंकि there was not a lot of work and you had to see and just be very careful कि भाई अब काम नहीं आ रहा तो अब क्या करें. But that was a very good opportunity to just reflect and just see कि कोई चीज़ सीखनी है, to brush up any skills that were there. Yes. You try making new music. That is very hard क्योंकि लॉकडाउन में आपका दिमाग भी it just locks down, so it's just very hard there. But abhi jaake things are getting better only in terms of work. But Work. let's just see what happens out there where things are just out of hands. बिल्कुल बिल्कुल. And things are getting worse day by day और let's just hope and pray कि मतलब यहीं पे कंट्रोल हो जाए और Mhm. मजीद ना हो, वरना मतलब बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो Yeah, let's just hope everyone's safe. आपने जिक्र किया कि मतलब you tend to get some time for yourself. जब उस तरह से काम नहीं होता तो you can focus on polishing your own skills, trying to learn something new. लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ चलें, I'd love to know how you started your journey. I mean, what was that very first day जब you realize, I this is my field, ये इसी लाइन पे चलना है जनाब. So just talk us through. To be honest, I don't even remember what was that exact moment, but I do remember one Mhm. moment that was क्योंकि शुरू में when I started off, I wouldn't even call it started off. It was more like experimenting कि क्या चीज़ें हैं, what is this? Like, what is this entire thing? I Mhm. downloaded this software. I think it was Sony Acid, उसका नाम था. And उस पे Mhm. ये जोश चढ़ा के let's try to record stuff. And I had borrowed a microphone from a friend of mine, and it was not even those condenser microphones like just now, which you have in studios. It was one Mhm. of those handheld mics. And singing का मुझे थोड़ा बहुत शौक था तो मैंने कहा चलो let's try this out. So I would just record stuff on that and just wonder कि आवाज़ क्यों नहीं ठीक आ रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो बाकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो तो नहीं थी, बस सीधा कंप्यूटर में प्लग इन किया और आप बस कह रहे हो कि चलो जी. कुछ तो हो, बस यही है. और आई रिमेंबर रिकॉर्डिंग अ कवर ऑफ बिली जीन by Michael Jackson, and my Mhm. mom running into me, like she entered the room and I was doing one of those high bits, and she just started laughing कि ये क्या हो रहा है, और मैंने भी उस वक्त माइक साइड पे रखा है, मैं भी हंस रहा हूँ. But that was one of those first moments that I remember, just experimenting with everything there. फिर आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता ये कितने साल पुरानी होगी बात? I
think this is 2009 or 2010. I Wow. think so. I think this was 2009. क्योंकि उसके अगले साल ही फिर someone brought in a microphone and which they called it ये प्रोफेशनल माइक्रोफोन है और इससे यूज करते हैं मैं उसको देख के कहता वाह ये तो एक एक्चुअल चीज है इससे तो मैं एक्चुअल सॉन्ग्स Ooh. करूंगा और ये तो वो खैर कनेक्ट करके उसको सीखा क्योंकि ऐसा ऐसा वही चीजें थी कि नई चीजें आती आती रहीं क्योंकि this is a huge world and every day you're learning something new. So just imagine when you're starting off you just get so fascinated कि इस नॉब से क्या होता है इस सेटिंग को छेड़ेंगे क्या होगा इस तरह रिकॉर्डिंग क्या होगा फिर जो म्यूजिक प्रोडक्शन का एक था जोश वो भी इस तरह ही आया कि I could play the guitar back then, not very well, but I was like, कि बस मैंने कुछ music produce करना है. I need more instruments there. I didn't have a band. I didn't know क्या करना है. तो बस वो करते करते, it was more out of necessity than curiosity, which turned into curiosity later on. And so I just learned how to do that because nobody else could do it. Who I knew in my immediate Huh. circle. तो वो करते 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 and then things just started unfolding. चीज़ें नहीं सीखते रहे, just being curious every day, just knowing कि अच्छा आज ये सीखा है तो इसको अप्लाई कैसे करना है, अब क्या Very करना cool. है, That's what's new out there. So yeah, और वैसे भी मतलब every day you're learning something new and every day there's a new product being launched in the market. और मतलब वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग फिर खत्म नहीं होता फिर वो नई चीज आ गई है फिर बंदे को होता है अब ये वाली जादू की छड़ी देखनी है मैंने इसका इसके क्या डेफिनेटली सीन है डेफिनेटली और क्योंकि आपको ये होता है कि बस जो मैं इसकी क्या यूज़ कर खास रहा है हूँ वो शायद ठीक नहीं है, एक और चीज़ होनी चाहिए। एंड आपके तो हाँ ये वाला बिल्कुल माइक लेना है, ये वाले हेडफ़ोन्स लेने हैं, वो ये नया सॉफ्टवेयर है, इससे शायद मेरी रिकॉर्डिंग ठीक होगी। बट यू जस्ट गेट लॉस्ट इन दिस बिल्कुल स्पाइरल एंड although अब you do realize it's more about the your own ears, your own knowledge, but फिर भी अंदर एक होती है एक आवाज़ जो कहती है नहीं, ये चीज़ ट्राई करो। नहीं वो ट्राई करना बिल्कुल 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 एंड ये और वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ बंदे को आती हैं कि हुँ, किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है हाउ यू गोइंग टू गो अबाउट इट तो डेफिनिटली। स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन डिड यू हैव एनी इंस्पिरेशन और या फिर आप किसी को फॉलो करते रहे जिनको देख देख के भी थोड़ा जोश चढ़ा मेरी इंस्पिरेशन एज़ सच लाइक आई वुडेंट से कि मैंने किसी को सुना और मैंने कहा कि मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन ये सुनने के बाद करनी है। लाइक आई सेड अर्लियर मैंने आई जस्ट स्टार्टेड क्योंकि देयर कंप्लीटली वाज़ आउट ऑफ नोबडी एल्स क्यूरियोसिटी हाँ। बट देन व्हेन आई डिड गेट इनटू इट तो मैं टिम्बालैंड को काफ़ी मैंने सुनना शुरू किया। आई रियली एन्जॉयड हिज प्रोडक्शन लाइक स्टफ ही डिड विद जस्टिन Timberlake and all these other artists there. Like the way he would produce those songs and जिस तरह वो एक वो बीट बॉक्सिंग की चीज़ बीच में इंक्लूड करना मैंने बीच में बीट बॉक्सिंग भी स्टार्ट कर दी जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद ओके दैट तो आई वाज वेरी बैड एट इट बट इट जस्ट हेल्प्स यू सॉर्ट ऑफ get the beat out there when you're coming up with an idea. हेलो हेलो And we're facing a problem with the internet. Hmm. I'm not sure problem किस end से आ रहा है. Let me just check.
राइट आई थिंक शहीर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ है. राइट अच्छा. Well, Miracle will be back in a while और बात यहीं से शुरू होगी. जो सबसे आज इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज how music can heal your mental illness. तो थोड़ी सी बात इस पर भी होगी और जितनी देर में मिरेकल वापस out and he is back. Let me just add him to the stream and voila. Hi. I'm back. अभी मेरे साथ वो हुआ है वो नहीं, आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, बोलते रहते हैं, you turn out the other person is not there anymore. So I was just speaking and speaking, but my internet got अच्छा. disconnected. So Oh, that's okay. it's That's fine okay. now. Some fluctuation there. कोई मसला नहीं. I was just trying to Sorry figure about that. out के problem किस end से हो रहा है. Then I realized I am still live और नहीं, that was me. That was so me. so no problem. No. ये चलता रहता है. ये तकरीबन हर एपिसोड में ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है. Oh, तो ये जब तक नहीं होता तब तक पता भी नहीं चलता कि we're sitting in we are Pakistan live. and we're live. So part of it. So बात चल रही थी कि I don't remember बात क्या चल रही थी लेकिन we मुझे भी can भूल have a गया fresh है. start to it. We can have a fresh start with it. और अच्छा, speaking of music production, what do you think are the basic let's say components या basic equipments, basic skills जो किसी के पास होनी चाहिए, किसी को आनी चाहिए for those who are planning to get into this field? Okay, so I think starting from basic equipment that you might need is just, it's very simple just to get into this. People try to make it very complicated, but you just need a computer, could be any PC, Mac, जो भी है, a microphone. You can probably see that here. I think like, this is a microphone, a condenser microphone that you just connect to a sound card. Uh, and that's pretty much it. Headphones हो गए या monitors या speakers हो गए आपके, anything that you're comfortable with, which you want to start off with. And once you have these things, then it's all about what you know about music and how much music you listen to. The skills that you need are totally dependent on what you know and how much you want to लर्न. सो आपने सॉफ्टवेयर तो सीख लिया, किस किस तरीके से ऑपरेट होता है. Or any आपने software इक्विपमेंट, recommendation? any, you can use any basically you call them digital audio workstation, DAWs. You can use any DAW that you want. It's all about what attracts you, what you find appealing. Maybe I'm just trying to shift to a new DAW कि मुझे वो ज़रा attract करना शुरू होता है. Although the one I've been using it for like 10 years now, but it's just about that, Oh, discovery process. So there is no dependency on that. कोई भी किसी से बेहतर नहीं है. जो actual skills हैं बस आपके कान और ये दिमाग आपका बस. You Tamar. just have to be open. You have to be very curious. म्यूजिक जितना सुन सकते हैं सुने, और हर किस्म का सुने. डोंट जस्ट लिसन टू म्यूजिक दैट यू एंजॉय, लिसन टू द म्यूजिक दैट यू हेट, because you will end up finding something कि अच्छा what is into this. Okay, as a producer, at the end of the day, you're making music for the audience. You Hmm. have to understand audience क्या सुन रही है, audience का क्या taste है, uh, आजकल क्या चल रहा है. क्योंकि आपके जो एक ट्रेंड्स भी ऑडियंस की जो एकदम एक चेंज हो जाते हैं. हाँ, वो भी आपके जितने भी हैं ट्रेंड्स वगैरह, दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन योर सोसाइटी, इन
could be your immediate society or the society that is uh, influencing the music that you're listening to. अब जिस अगर आप rap या Hmm. hip hop पे आ जाएं, the rap and hip hop that is happening here is very much dependent on the current situation, what people are going through here. The same goes with other types of music. अभी जिस तरह ऐसा ऐसा लोग थोड़ा 80s की एक साउंड पे आना शुरू हो गए हैं, एक वो नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है लोगों को, तो वापस Hmm. आए. So these things sort of happen. So you have to be very open to it and be very receptive to what's happening. Only then you can make something that. So you just have to wrap your message, what you want to say, in what people will listen to. So एक equilibrium आपको जरा find करना पड़ता है. So I think that's Right. pretty So, much it. Baki, you just learn on the go. hmm. अच्छा, um, आपने जिक्र किया रैप का. इसी तरह there are countless other genres. How do you differentiate between genres? मतलब अगर आप सुन रहे हैं, अगर कोई नॉर्मल बंदा सुन रहा है म्यूजिक, वो किस तरह से कैच कर सकता है कि जनाब ये रॉक है, ये पॉप है, ये हिप हॉप है, ये रैप है, ये कंट्री म्यूजिक है. तो मतलब क्या कोई इस तरह के कोई की नोट्स होते हैं जिससे आप एकदम पकड़ सकते हो कि अच्छा ये जॉनर है? हाउ Mm, डू यू गो अबाउट दैट? so every genre that is there, उसका जो एक की आइडेंटिफायर होता है वो डिफरेंट होता है. अब फॉर एग्जांपल रॉक में you have the electric guitar, you have drums, you have that, डिस्टॉर्शन. that certain rhythm that's going. उसके ऊपर आप उर्दू में गाएं, पंजाबी में गाएं, फ्रेंच में गाएं, इंग्लिश में गाएं, जो भी है, और जिस चीज़ के बारे में आप गाएं, वो रॉक के उस कैटेगरी में आ जाएगा. सेम गोज विद ब्लूज. Blues में you have the electric guitar, you have the drums, but it's what chords are being played, what notes are being played, how they're played. रिफ उसमें और rhythm जो होता है एक factor आपका आ जाता है. Rap में you get those monotone lyrics आपके आगे on top of multiple types of beats. उसमें भी आपके, क्योंकि you have genres and you have sub genres. You get rock, उसमें you get punk rock, you get hard rock, you have alternate rock. तो सब जॉनर्स भी इस तरह पॉप बनते रहते रॉक हैं. बिल्कुल. तो इट्स वेरी अभी आपस में काफी डिफ्यूज होना शुरू हो गए हैं. यू गेट रॉक विद रैप इन इट, यू गेट रैप विद टच ऑफ कंट्री म्यूजिक इन इट, ईडीएम बनता है जिसमें कंट्री म्यूजिक का कोई सैम्पल यूज हो रहा होगा. सो इट्स लाइक वेरी क्या कहते हैं, एक इट्स लाइक अ हैप्पी मिक्सचर सा फैमिली. एक है. हाँ, it's pretty much there, and you have these new genres coming in, like जिस तरह dubstep, although it was there for quite a while, उसने popularity gain करना शुरू कर दी थी ये आप I think 7-8 years back or so. अब it's not बिल्कुल. that popular anymore. So ये सब चीज़ें इस तरह evolve करती रहती हैं, आती रहती हैं. ऑलराइट, राइट, राइट. अच्छा, um, how do you think that music can help you to heal, or music can be used as a therapy for mental illness? It's a very interesting question. So music is just about uh, it stimulates your mind, your brain a certain way, right? आप जिम जाते हैं तो आप थोड़ा heavy music सुनते हैं because you want it to motivate you to sort of get the blood pumping in your veins and everything. The same way रात को सोना होता है तो आप एक different kind of music सुनते हैं. So it's a two-way process. We listen to music according to our mood and our environment, and Hmm. also we sometimes are influenced by music and our mood changes. So mental health ke point of view se agar, again, I can't get too technical into it, but as far as I know, uh, music can help heal you even in the creative process. So when you're making music, you are healing. So
Right. You have a lot of stories to tell, you have a lot of feelings, you have a lot of emotions, you have a lot of experiences that you want to share. Some people write it down, some people just like to talk about it. एक वो catharsis का जो एक process होता है, वो म्यूजिक की राइटिंग में, म्यूजिक की मेकिंग में, when you're producing it, when you're like, when I just pick up the guitar and I play for 30 minutes, it's just about me letting out that certain Yeah, you're experience, that certain expressing yourself flow. through music. Yeah. So that is rewiring my brain. That is sort of helping me heal. I can do that with anything. Like, I'm not just saying मैं उठा के कोई रोने धोने वाले गाने बजाऊं कि मेरा कोई ब्रेकअप हो गया तो बस ये मैंने उस तरह हील करना है. नहीं. You're talking about sometimes you feel happy and you want to express it, because if you don't express happiness, you don't express sadness, any feeling that you have, it does help you, sorry, it does affect you. So you have to just let it out. Some people like to write कुछ mic पे आके जब रैप कर रहे होते हैं, एक एग्रेशन हो या एक स्टोरी टेलिंग हो, एक दर्द हो, उसमें जो भी है, वो आपको एज एन आर्टिस्ट और एज अ जस्ट अ creative individual, you just are healed through that creative process. That's what I think. Well, irrespective of the energy that is being stored in you, basic वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उन दोनों का इम्पैक्ट उतना ही होता है, कैन बी, एंड देयर इज सम प्रॉब्लम अगेन. नो प्रॉब्लम. Can you see ओके. me? I'm या. back. यस. हेलो. Yeah. राइट. तो मैं कह रहा था कि uh, irrespective of the energy that has been stored, um, whether it's positive or negative, you can let it go through music. Yeah. So एक और बड़े मजे की चीज मेरे माइंड में आई है. I've seen a lot of people जो कि सोते हुए या म्यूजिक प्ले करके तो फिर सोते हैं. Hmm. So सोते how हुए do you म्यूजिक प्ले think, करते हैं. मतलब म्यूजिक प्ले करके सोते हैं, like they have their earphones plugged in और कुछ ना कुछ वो play करते हैं, and they cannot sleep without uh, playing music. So how does that affect their brain or their mind? um, hello, hello, hello. Right. Right. So Miracle will be back soon. थोड़ा सा इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, लेकिन not a big problem for us. um, he'll be back soon. और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं नेक्स्ट एपिसोड का भी. जितनी देर में मेरिकल ज्वाइंस अस, तो नेक्स्ट एपिसोड में बख्शी ब्रदर्स वुड बी ज्वाइनिंग मी फॉर अनदर लाइव सेशन, यानी कि ऑन ट्यूसडे. आई थिंक दैट्स 2nd June. So yes, Bakshi brothers will be here with us, or and a miracle is back. All right. Yeah. Sorry about that. My internet is just. कोई मसला नहीं. You know let's play a short game, थोड़ा सा cover up Okay. करने के लिए.
ये थोड़ा सा ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है आज शायद. I think this time it was you. Yeah, it sure was. Now So, we're even. anyways, it's a segment called Dil Ki Baat. Ooh. Um, आपने आपने it's very easy. Nothing too personal. आपने वो सुना होगा that this or that game. So I'll give you two options. You'll have to pick one. Okay, Perfect. Let's roll. perfect. Rapid fire. Um, new clothes or new phone. New clothes, Coffee or tea. coffee, Jogging or hiking. hiking, Cereals or Cerelac. cereals, What's worse, laundry or dishes? dishes, dishes. Need or want? Need, Business or job? business, Pizza or burger? pizza any day. Pizza or biryani? Biryani. Okay, I just contradicted Ah. myself. Biryani or Halim? Let's do this. Biryani, biryani. All right. Chawal ya roti? You're confusing it. Depends what is there. But roti. I can have that like वैसे ही. फिर contradictory हो गया. क्या मतलब वो Travel or दोनों home? choices के बीच. Uh, hmm. Uh, home. I can make music. Home. Introvert or extrovert? Honestly, I have no idea. It fluctuates. Extrovert It right varies now. from person to person. Yeah, right now extrovert. Definitely, yes. अच्छा, एक एकदम से एक माइंड में एक और बात आई है. Hmm. You're called Miracle, Hmm. and you've named your studio as Stardek. Hmm. ये चीज मुझे बड़ी fascinate करती है. I mean, what's that? What's the idea behind Miracle and Stardek? Okay, so Stardek is the easier one to answer first. Stardek was something very random. Like there was not a lot of thought put into it. It was just like okay, we need to come Like up you with were a very watching cool Star name. Wars and it clicked you. That's what I tell people. The real story is very much different, Oh, but that's what I अच्छा. tell people. Okay, it's like stars and Star Wars and Star Trek. Because I needed to come up with the name, and a friend and I were just brainstorming names. Like, what should it be? What should it be? And we just landed with Stardek, and we slept on it. And then we're like, okay, it sounds cool. Let's just go with it. And then when we made the Instagram pages and this everything, so now it's there. We probably would have thought of something different अगर 3-4 दिन और होते लेकिन when it was done it was done. तो 3-4 दिन में तो मतलब 300-400 और नाम आ गए होते हैं. So it's अ, अ, best, अभी कि भी आते जब हैं. कुछ चीज क्लिक कर रही है बस. अच्छा. हाँ. But you just go with what you have. Yeah. And what about Miracle? And miracle was something that I put a lot of thought into, and this is the first time I think I'm actually mentioning this publicly. I So I feel was special. trying to come up with so I was trying to come up with a name, but not necessarily just a name, but more like an identity. Like what I was as me, who is not doing music, was getting different from what I am as a musician, what I can do. And there was like a very parallel life, you would say, that was going on. तो मुझे
यही फील हुआ कि आई थिंक आई नीड टू अंडरस्टैंड हु आई एम, व्हाट आई नीड टू डू। क्योंकि अगर मैं म्यूजिक करता था, सो आई वुड फील like I don't feel that creative surge, that creative energy there. So when I separated myself completely, the idea of being a miracle was there, and it was not like me as a miracle, but everyone as a miracle. Then And again, this as music as miracle. more like how we got here. And this name miracle came in when I was watching this this was a stage magician, and he was going through his routine, and उसमें वो यही explain कर रहा था कि how we could have been anyone or anything, but the tiniest of choices that we make, they made who we are now. And not just us, but our parents, our grandparents, their parents, everything that you do, so we are mi- miracle. And he said, I think he said at the end, you are miracle. And I was like, okay, wait, I am miracle, and not just me, Oh, but अरे everyone वाह, is. अरे वाह, So that interesting. just like hit me, and it just was like, okay, if I am miracle, and I just went through what has happened in my life, with choti choti choices, events which turned me into me. That makes me a miracle, and that makes everyone a miracle. Everyone, their lives where they are is just, that is a miracle. The fact that we're Miracle. alive Oof. is a miracle. So yeah. वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज है। अब कितने लोग हैं जो मिरेकल नहीं बल्कि मर्कल कहते हैं? I'm नाइन dead sure के बहुत ज्यादा हैं। 99.9%, क्योंकि मैंने थोड़ा सोचा कि लेट्स रिमूव द कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि मिरेकल ऑलरेडी एक रैपर है बेसिकली, द एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ मिरेकल. सो आई कुडंट बी हम्म। हिम. So I was like, okay, let's be something different. So I went with these no consonants. So yeah, वो तो हर कोई कहता है. Everyone. ओह, So which is why I've even written on my Instagram bio that pronounced as, ताकि वो लोगों को पता हो कि क्या कहते मिरेकल। नहीं, वो स्पेलिंग्स से एकदम मतलब यही लगता है। हैं. हाँ. इट्स मर्कल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बैकग्राउंड जान के वाकई बहुत मजा आया। अच्छा, um, you've worked with Umair Jaswal and Danyal Zafar, and you're working on some upcoming projects as well. So, thoda sa, if you could highlight those a bit. How was your experience with Umair Jaswal, with Danyal Zafar? With both of them, the experience was excellent. So with Umair, it was basically a song for OCL. उसके भी Mm-hmm. EP रिलीज हुए पाकिंग के नाम से. उसमें there's a song Veshi, and that was I think Mm-hmm. that's the song that I produced on his EP, and we had Umair Jaswal on it. तो वो जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था. एक क्योंकि व्हेन यू वर्किंग विद समवन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक क्रिएटिव एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही है. योर like how you're comfortable with each other. So both Exactly. with Umair and with Daniel, it was like it was like it was very easy to work, and you just learn things. You just bounce ideas off, and you just get to where you are. बिल्कुल। और इसमें वैशी को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा था? वैशी को प्रोड्यूस होने में तो इनिशियली जो उसका एक स्केलेटन था, व्हिच वाज द मेन रिफ, द ड्रम्स, द बेस, एवरीथिंग. आई थिंक दैट वाज 1 week max. हम्म। Or I would even call it like 3 days even, क्योंकि वो क्या हुआ था, I was trying to come up with something कि ये riff होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए. मैं OCL के साथ I would just share a few things, and he would tell me हाँ ये try करो, वो try करो. तो एक दिन मैं वैसे ही स्टूडियो ही बैठा हुआ था. I just randomly picked up my guitar and I started playing the main riff, and I just started recording it there. और मैंने उसको वो I think voice note ही करके ना भेज दिया, and he enjoyed हम्म। it. He was like, this is amazing.
उसी वक्त बैठ के आई थिंक ड्रम्स वगैरह ऐड किए, फिर बेस प्ले कर दी, एंड थिंक 2-3 दिन बाद कुछ और आइडियाज़ आ रहे हैं वो किया, तो वो सेट सेट हो गया। फिर उसी पे फिर बैठ के सारी जो राइटिंग प्रोसेस हुआ, जो जैम किया विद बोथ उमेर एंड OCL, इट वाज लाइक वो फिर वहाँ से आगे बिल्ड अप हुआ। सो नॉट अ लॉट वाज चेंज्ड on what was initially made, but it took a month to get like the entire thing in हम्म। place. अगर मैं उसको एग्रीगेट बताऊं कि टोटल कितना टाइम उसमें enter हुआ। अच्छा है, मतलब मेरे ख्याल से नॉर्मली भी इतना ही टाइम लगता है। हाँ, इट्स अ वेरी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थिंग, लाइक जो अब जो दानियाल के साथ प्रोजेक्ट था, आई थिंक दैट्स द फास्टेस्ट सॉन्ग आई एवर डन, अच्छा। because I made this piece of music, and when I played it, he was like, let's just have it on my album. मैंने कहा हाँ, definitely, sure. तो he recorded the vocals. I think 2 days after that, he sent it to me. He's like, "ये कैसा लग रहा है?" And we like, it just sounded so complete there. मैंने उसके ऊपर थोड़े और guitars like add किए, वापस भेजे, and I think that was it. It was done, and there was not a lot of exchange there in sense कि नहीं ये ठीक नहीं है वो करो. जो मैंने किया वो उसको पसंद आया. फिर उसने जो वापस एक चीज लिख के भेजी और फिर रिकॉर्ड भी की. It was just like, like I was just like, that's it, we're done, हो गया, and it just turned out great. और अच्छा, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन? क्या मतलब पहले लिरिक्स लिखे जाते हैं, या पहले कॉम्पोजिशन बनाई जाती है, या पहले कॉम्पोजिशन होती है फिर लिरिक्स होते हैं? अब जस्ट टेक अस थ्रू। A process though, it varies from person to person, and even the way you work sort of changes based on the project. Sometimes I end up making a piece of music, कोई beat create कर ली, कुछ guitars वगैरह आपने कर लिए रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर then you start writing stuff. Sometimes you come up with an idea of what to write, and then you sort of make a piece of music, and then it sort of complements, and then you write more, and then you make some more music. So it's a different process. Some people I know, they uh, write first, and then they need music to fit there, and sometimes people need the entire song there, like the entire arrangement जिस पे वो रखते हैं. तो it's a person to लिरिक्स ऐड person करते हैं। thing. जिस जो भी हाँ। आपके लिए comfortable हो, as long as you get a good song, nobody cares कि पहले क्या आया था, क्योंकि वो at the end of the day it's a good song बस. मतलब ये भी वही है, मुर्गी आई थी कि अंडा? हाँ, बस आप enjoy करें बस जो चीज़ है, क्या बस. हाँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं। आदम खान सेंट थम्स अप, ओके। अच्छा, दिस वायरस आस्क्ड व्हिच फेमस म्यूजिशियन डू यू एडमायर? Which famous musician? I admire a lot of famous musicians, but I think if I were to take one name, that'll be John Mayer. उससे मैं काफ़ी inspired भी ओह, हूँ, his guitar playing and everything. And there are other names, but अगर इस टाइम के हिसाब से देखे रहे कि वो जो relevancy है, बिल्कुल। where he is now, the kind of music he's doing, so I would say John Mayer. Yeah. वाह वाह वाह! और एक और क्वेश्चन है। जोशुआ कमेंटेड, मुझे अच्छा सिंगर बनने के लिए क्या करना चाहिए? और और आगे लिखा हुआ है, जोशर भाई खुद भी अच्छे सिंगर है। ओ भाई, क्या कर रहे हो यार? नहीं नहीं, मिरेकल नोज आई डोंट सिंग। क्या नहीं, I have heard, I know otherwise that you can sing. अच्छा, एनीवेज, मतलब जोशुआ के लिए, मतलब वो कह रहे हैं जी मुझे अच्छा सिंगर बनने के लिए क्या करना चाहिए? सो यस, व्हाट शुड यू डू? आई मीन देयर आर वोकल एक्सरसाइजेस एंड ways to polish your vocal cords, and then you Mhm. can practice with. Khair, over to you. It's pretty much the same. Like, just try singing your favorite songs and record yourself on a phone and just compare.
you know, आपको वो समझ आ जाती है. At least that's what I would used where to do, you and I still stand. do that sometimes. You just record a song that is already out there and you see कि oh अच्छा ये चीज़ मैं अगर कर रहा हूँ तो कैसी साउंड कर रही है. बाकी vocal exercises, practice, ear training is very important. Knowing किस स्केल में गा रहे हैं, क्या अगला नोट क्या हिट करना है, वो तभी आता है जस्ट इफ यू नो हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, प्रैक्टिस विद दैट इंस्ट्रूमेंट. थोड़ी बट बहुत म्यूजिक जस्ट थ्योरी आती हो. थ्योरी ना भी आती हो, थ्योरी इज आई थिंक सीखें, अच्छी अच्छी बात है, बट अगर नहीं नहीं भी आती है सो जस्ट सिंग योर फेवरेट सॉन्ग्स एंड जस्ट प्रैक्टिस एवरी डे, क्योंकि इट्स नॉट इजी. आई मीन इफ यू जस्ट आपका वो होता है ना, अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी पी लो या कुछ इस तरह कुछ कर लो रिकॉर्डिंग से पहले, तो दैट कैन रियली मेस अप योर वोकल कॉर्ड्स. सो वो चीज़ें भी देखना. बिल्कुल तो बस ये करें, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल. सिंगर बन जाएंगे होपफुली. Bus practice, practice, practice. You प्रैक्टिस. just pick up that axe and hit the tree every single day, and definitely it's going to fall down one day. So it's यस, likewise. आप रोज practice करते रहे गानों के साथ गाएं, and yeah, you'll be डेफिनेटली. मतलब क्या पता एक दिन ऐसा है आप मिरेकल के साथ गाने प्रोड्यूस कर रहे हो, तो all the या very मैं best आपके for साथ that. कर रहा हूँ. मतलब one way or the other. अच्छा, एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है. If America was not a music producer, and if he got a chance to start all over again, so which profession would he would have chosen? Miracle अगर ना होते म्यूजिक आर्टिस्ट तो क्या होते हैं? So I would have been a magician and an illusionist, और मज़े की बात ये मेरा शायद नाम यही होता. So yeah, Miracle. because I was ये किस तरह से भाई, really ये much किस into तरह से? that. So अच्छा. before starting everything else, I was really into magic. If you remember, मैंने ये भी कहा, मुझे नाम भी तभी आया था. I was watching a stage magician, उसकी मैं videos देख रहा था. हाँ. So I was really into that. The idea of just वो जो ये आई थिंक डेविड ब्लेन वाज वेरी पॉपुलर बैक देन. उसके काफ़ी शोज लगते थे, तो मैंने वो देखना शुरू किया, सीखना शुरू की चीज़ें. एंड देन आई ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग दैट स्टफ इन कोई, मतलब मैं कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ. तो हाँ, अगर मैं ना होता म्यूजिशियन, में शायद स्ट्रीट मैजिक कर रहा होता लोगों के पास जाके. ओहो. कुछ कुछ थोड़े बहुत शुरू किए थे, कुछ कार्ड ट्रिक्स या कुछ इस तरह की? हाँ, काफ़ी किए थे. आई डिड माय फर्स्ट ट्रिक अपने नान वाले के साथ की थी मैंने. आई वाज वेरी यंग. अपनी नान लेने गए तो बड़ा मैंने उससे बकरा वो पकड़ा आई है थिंक वो करने के लिए. उस टाइम वो डेविड बीन की कौन सी ट्रिक आई थी कि वो नहीं, वो कार्ड साइन करता था, फिर वो डेक के बीच में डालता था, नहीं वो स्नैप हिज फिंगर्स ऊपर आता था. तो मैंने वो वाली ट्रिक की थी, एंड ही वाज जस्ट लाइक वाह भाई ये किसे की है. ओए. अच्छा. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है. इफ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री, व्हाट वुड इट बी? इंटरेस्टिंग. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक कोलैबोरेशंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा और अभी हो रहा है, थोड़ा और, like everyone working, and I just don't mean musicians as I mean, sorry, not just the artists, but even producers and everyone just working with each other more. Because एक बंदा अगर सारे काम कर रहा है, it's easier to have specialists in everything, and सब मिलके काम करें तो you'll be able to make a better product. आप अगर let's take the US music industry, वहाँ पे you have a specialist for everything, and वो जब मिलके एक टीम काम करती है, so you get the best of the best. तो बिल्कुल जैसे मतलब मिक्स मास्टर के लिए अलग बंदा है, साउंड इंजीनियर अलग है, Definitely. स्टूडियो के अंदर की सेटिंग अलग है, साउंड अलग है. तो यस 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 डेफिनेटली. वैसे अब मुझे वो चीज बहुत फैसिनेट करती है कि मतलब कुछ इससे पहले हुए हुए भी हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस. कोई ईस्ट मीट्स वेस्ट वाले कोई कुछ और अगर ट्रैक्स निकले तो मतलब आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Hmm. तो क्या हाँ, ख्याल है and आपका?
anything that just works for the audience. आपका फ्यूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी काफ़ी अब पहले भी था, अब थोड़ा फिर से पॉपुलर होना शुरू हो गया है, बट इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. Like, don't follow a trend because it's a trend. If you really feel it कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए है, and this new trend is something that is going with you, then just go for it, or just do something that is so good it becomes a new trend. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब stop complaining, stop thinking, start working. Just do it. Just do it. As Yeah, just do Nike said it. it. अच्छा, apart from music, what are your interests? अभी तो म्यूजिक ही है. म्यूजिक अच्छा, में I'm so lost into this. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but अब म्यूजिक में, वो अगेन म्यूजिक में आई बचपन की हॉबी? मैं गिटार बजाता था, अगेन म्यूजिक. सो बट बाकी क्या थोड़ी बात है, और बहुत उससे वही, पहले मैजिक जस्ट टू टीचर? पास टाइम आप गेमिंग वगैरह कर लेते हो, जस्ट टू किल टाइम हियर एंड देयर, बट इट्स जस्ट अबाउट, हाँ, I'd say YouTube is a hobby. I think YouTubing should be recognized as a hobby now, because YouTube पे इतनी चीज़ें हम्म. होती हैं. जैसे नहीं, लोग पहले थे एंड मैं नेटफ्लिक्स टू. टीवी देखता हूँ. हाँ, Netflix even is kind of like a hobby, but YouTube पे इतनी चीज़ें हैं to watch, to learn, to entertain yourself with, that I think that itself is a thing that I do a lot. Like if I'm not making music, YouTube की मतलब यहाँ पे YouTube होगा स्टूडियो में, कोई वीडियो होगी about anything, anything that you just think ये कैसे होता है, and I'm just like, हाँ. just search it up and it's there. बिल्कुल. अच्छा, Miracle, we're moving towards the end of our program now. It's All right. so end pay. I mean, we've had a very fruitful conversation, and I'm pretty sure कि हमें जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, they've got to learn a lot. In fact, I hope I so. learned a lot today. तो So did I. एक, one last food for thought, uh, for everyone out there, or for those who are planning to get into this field. uh, just do what you feel like doing, um, and just learn. Like, don't just get into something without knowing what it is. That could be anything. I think that's all I can say. Like, जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ी research करके, थोड़ा सीख के, and when you are into it, so don't stop learning, because the only thing that can stop you from getting better at something is when you think कि बस मुझे आ गया, I am the best, सब कुछ आ गया मुझे. Very true. Keep on Very learning, true. keep on learning, because there's new stuff out there that you just discover. वो छोटी सी चीज़ भी कोई हो सकती है, and so just keep on doing that and just do what you love. Vehicle, or just to add to it, um, कभी भी mentorship ना छोड़ें. Try to find mentors who you can, मतलब के, who can guide you, who can teach you, who can tell you, and they can show you the right path. और बहुत बहुत चीजें हैं. In fact, कभी ये मत सोचें कि जनाब मैं बहुत बड़ा बंदा बन चुका हूँ. कभी ऐसा होता है कि आपसे छोटे, आपसे जूनियर आपको कोई ऐसी चीज सिखा जाते हैं कि मतलब आप ब्लैंक रह जाते हो कि मैन वाह, आई नेवर थॉट अबाउट इट. सो Exactly. yes, learning then again is a continuous process, and आखिरी दम तक बंदा कुछ ना कुछ सीखता रहता है. And Definitely. with this, uh, thank you very much, Miracle. It was an honor to have you. Or guys, Thank you so do much. check out Miracle's Instagram page. वैसे ये मर्कल है, आप मर्कल जाके लिखें तो फिर आपको मिरेकल मिल जाएंगे. तो the username is on the screen. You can read that and just put it on Instagram, and you can see his work. You are doing wonders. Keep up the good work, and looking forward to your next project. Thank you so much. It was a great experience being here, and best of luck for your show. You're doing a amazing job. Thank you very much. Thank you very much. It was Means a great lot. talking to you.
सेम हियर, सेम हियर। दोबारा फिर आपके साथ कुछ ना कुछ एक करेंगे, डिस्कशन, एक सेशन विद अ न्यू Definitely. टॉपिक। आपका प्रोजेक्ट रिलीज हो जाए तो उसके बाद एक बार हम करते हैं, और अगर यूं ही रहा तो क्रॉस द स्क्रीन बात होगी। Definitely. Until then, just stay home, stay at studio, and stay safe. Yes. Everyone else, please stay at home. Stay at home, please. खुदा का वास्ता, please. Things are getting worse. Khair, until next time, Miracle, thank you very much again. Right. Khuda Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.